क्या लाइव? यस, यस। तो भाइयों और बहनों और सज्जनों, जो भी क्या बोले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। जेन्युइनली मेरा इतना एड्रेनलिन ऊपर है ना, फॉर सम रीजन बीइंग, आज किसी की तो धुलाई हुई है, टाइड से, निरमा से, घड़ी डिटर्जेंट से, दना दन पटकाया है और बजाया है। यस। वो याद आ गया, घर पे जब काम वाली बाई आके वो बैट से कपड़े पटकती है ना, मस्त। आज फॉर सम रीजन, लाइक इतने सालों बाद इतनी खुशी, राइट? आई थिंक दिस विन इज वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि आई थिंक जब हम अच्छा खेलते थे पहले भी, तब भी हमने यूनाइटेड को हराया है। लाइक वी हैव ऑलवेज बीन अ बेटर साइड, बट फॉर सम रीजन हैविंग अ बैड सीजन एंड ऑल्सो डूइंग दिस, जस्ट अमेजिंग। क्या हुआ आज ये देख, एक मिनट ना, क्या क्या? हुआ ऑन दैट नोट, व्हाट हैपेंड टुडे? सो धवल प्लीज। या तो बेसिकली लाइक मैंने एक्सपेक्ट तो किया नहीं था कि इतनी धुलाई होगी, मतलब बेसबॉल बैल वो भी अनपॉलिश्ड सीधा पिछवाड़े पे इतना मारा है, लाइक हम देख भी नहीं सकते। और एरिक टेन हाग का अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है। लाइक जिसने वो फिल्म देखी है, हिंदी फिल्म, उसको समझ आ जाएगा ये क्या है। तो बेसिकली लाइक परफॉर्मेंस हमारी तरफ से, आई विल नॉट से इट वाज 100%, बट आई थिंक यूनाइटेड ने उसके ही मैनेजर ने बोला कि कंप्लीटली अनप्रोफेशनल। वो लोग सीरियस दिखे ही नहीं मेरे को आफ्टर उन लोगों ने एक सेकंड गोल कंसीड किया। पहला मैं बोल सकता हूँ कि लाइक गैक्पो ने बहुत ही अच्छा गैप से निकाला, बट देन इन सेकंड हाफ कंप्लीटली अनप्रोफेशनल डिस्प्ले एज पर देयर मैनेजर। राइट। तो दे जस्ट कोलैप्स्ड कंप्लीटली। और आई थिंक इट्स अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर आवर टीम कि हम चलो थोड़े क्वालिटी ऑपोजिशन के सामने भी ये कर सकते हैं इफ वी डू आवर बेस्ट। हाँ, गैप्स है हमारे टीम में अभी भी, बट हमारे पास वो क्षमता है गोल मारने की। आई थिंक ये प्रूव कर दिया। और ऑन रिजल्ट के बारे में, लाइक इट्स अ वेरी हिस्टोरिक रिजल्ट, यस फॉर श्योर। लाइक मैं मेरी हंसी रुकी नहीं जा रही थी, लाइक जिस जब मैच खत्म हुआ, लाइक 5 मारे तो क्राउड बोल रहा है 6-6, तो छठा और सातवां, एंड सभी ने 2-2 मारे और बॉबी को भी एक, सो आज लाइक सभी को ले, तू भी ले, आई मतलब थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे आज लगता है कि एक तो had I mean Harvey Elliott was a big factor. That right hand यस। side was a menace. And generally पहले starting of the season क्या हो रहा था कि like Harvey Elliott and Salah being on the same position, वो बार बार एक दूसरे के स्पेस में घुस रहे थे. And I think over the time I've realized कि Harvey Elliott is more playing with Salah. He's giving them the chance कि भाई तू आगे रह, तू बना, I'll give the ball to you, and that has helped him to get clarity कि ये मेरा role है. Salah's role is obviously being up there and doing what he does the best. Or I think our right hand side was really really good, and for some reason Purana Fabinho was back. Like he was tackling, he was getting to those second balls. मजा आ गया आज फैबिनो को देख के. Like I've criticized him so much on this podcast, but उसका रिवाइवल एंड ऑल्सो हेंडरसन डूइंग व्हाट हेंडरसन डज द बेस्ट इन मिडफील्ड. आज आज फॉर सम रीजन वो पुराना लिवरपूल, लाइक टाइटल विनिंग सीजन लिवरपूल जैसे खेलता है वैसा था. एंड गोल्स जस्ट केम बिकॉज पता था कि होगा. वी हैव द क्वालिटी एट दैट एंड. या तो मैं इस हिसाब से कहूंगा कि लाइक ऑलराउंड परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। लाइक फबिनी और हमें अगर जीतना है तो फबिनी और हेंडरसन दोनों में से एक को तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेलना ही पड़ेगा। और फबिनियो का आई थिंक सबसे ज्यादा की है, बिकॉज वही प्लेयर है जिसके पास पासिंग स्किल है, और लाइक ओवरऑल ही इज बेटर देन हेंडरसन। तो अगर फबिनियो खराब खेलता है तो आई डोंट थिंक वी विल डू वेरी वेल इन एनी गेम। तो ये हमारे लिए आई थिंक दिस वाज गुड कि मिडफील्ड में हमारा कंट्रोल काफी रहा। प्लस आई थिंक थोड़ा एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था यूनाइटेड के प्लेयर्स की तरफ। कोच का तो, मैनेजर का तो आई डोंट नो, आई डोंट रियली नो उसकी टैक्टिक्स और इसके बारे में मैंने देखे नहीं यूनाइटेड की गेम्स, तो आई कैन नॉट से, बट आई थिंक प्लेयर्स केम ऑफ एज अ लिटिल
टू ओवर कॉन्फिडेंट, और काफी जो फर्नांडिस जो एज अ कैप्टन ही वाज अ डिस्ग्रेस कंप्लीटली, आई वुड हम्म, से। एक जो वीडियो वायरल है कि बाइक चिटिच ने उसको उससे बॉल छीन लिया, मतलब उसकी इज्जत उतार ली, फिर भी उसके बाद भी ही वाज जस्ट लाइक स्ट्रोलिंग। तो ये तुम आम बैंड लेके अगर ये व्यवहार करोगे खेल के दौरान, तो फिर यही तुम्हारी हालत यही होगी। आंच नहीं खाए, नसीब है उनका। नहीं, I think intensity, there was lot of intensity trying हम्म। to get the ball, जो हम लोग हमेशा बोलते थे ना कि have वो बॉल रिट्रीव करने का जो इंटेंसिटी था वो बहुत ज्यादा था। हम्म। आई थिंक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टर्न ऑफ एटीट्यूड इन दैट सेंस, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस वाला मैच अगर देखोगे तो उससे बेकार मैच तो मैंने नहीं, मतलब ऑब्वियसली और भी बेकार मैचेस हमने देखे हैं, बट लाइक हम्म। दैट वाज लाइक नींद बिगाड़ के देखने वाला मैच तो था नहीं वो बिल्कुल भी। एंड हम्म। फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस कमिंग अप टू दिस गेम, लाइक that turn of event was crazy, I think। हाँ। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई वाज लाइक कि चलो ये मैच अगर निकल जाए तो इवन इफ वी गेट अ पॉइंट फ्रॉम दिस वुड हैव बीन गुड। हम्म। आई आई वुड थिंक। से मेरा कॉन्फिडेंस था कि वी कैन विन, हम्म, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एनफील्ड पे है, और थोड़ा एक इफेक्ट रहता है यूनाइटेड के या सिटी या चेल्सी के सामने अगर हम होम पे खेलते हैं, कि हम्म, नहीं आज तो हमें अच्छा करना है। तो हम्म, प्लेयर्स के को भी एक नेचुरल थोड़ा इंसेंटिव मिलता है, लाइक एक थोड़ा हम्म, अंदर से एक बूस्ट मिलता है। तो आई हम्म, थिंक ये तो हुआ ही, पर कंपाउंडेड विथ यूनाइटेड्स कंप्लीट ओवर कॉन्फिडेंस, और उन्होंने, आई थिंक मैंने पहले 30 मिनट में देखा तो दे वर नॉट ट्राइंग दैट गुड। उनका हार्ड, जो भी आई थिंक टैक्टिक था काउंटर अटैक पे खेलना, रैशफोर्ड को खिलाना, इट वाज नॉट वर्किंग आउट, लाइक आई दे वर नॉट एग्जीक्यूटिंग देयर प्लान। तो आई थिंक उन्होंने इनिशिएटिव लूज कर दिया शुरुआत से। आई थिंक और एक चीज ये भी मेरे को शायद अभी जब तू बोल रहा है, आई थिंक व्हाट मेक सेंस इज they were waiting for a Liverpool mistake rather than like they going on हम्म। offensive। उनको ऐसा लगा कि भाई we are really good at counter attack, लिवरपूल को आने दो, एंड देन अगर वो नहीं कर पाएंगे तो we will take them to cleaners, but apparently Yeah. just Liverpool came out like questions from outside the syllabus। They Yeah. did not think, I think also with the midfield उनको लगा होगा कि ये हार्वी एलियट is a वो liability। हाँ, आर्नोल्ड की तरफ था ना, ट्रेंट की तरफ हाँ, था वो। एग्जैक्टली। आई थिंक उनका यही, मेरे ख्याल से ये टैक्टिक ज्यादा था कि ट्रेंट को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, बट दे कुड नॉट डू इट। तो आई थिंक वन डायमेंशनल अप्रोच में भी उन्होंने रखा, एंड दे पेड द प्राइस। आई थिंक कीपिंग ट्रेंड, वो वाले ट्रेंड पे जाते हैं तो विल से कोनाटे वाज मैसिव। या। कोनाटे ने बहुत मचाया आज के गेम में, एंड आई थिंक ही गिव्स दैट स्टेबिलिटी। एंड जो गोमेज जैसा प्लेयर होता तो शायद आज हम इतने कॉन्फिडेंस से नहीं खेल पाते, एंड हिज इंजरी टेल्स अस कि हमने कितना मिस किया है उसको। डू यू थिंक लाइक गोमेज होता तो वी कोनाटे, माइट हैव कंसीडर्ड वन टू। राइट, so do you think like this Van Dijk Konate या। partnership is the way forward for us? आई थिंक यही पार्टनरशिप, इफ दे आर फिट, एंड इफ कोनाटे इज नॉट फिट, देन मैटिप। Right. आई डोंट थिंक गोमेज को हम खिला सकते हैं, बिकॉज फॉर वॉट एवर गुड गोमेज हैज, Hmm. उसकी वीकनेसेस ही उतनी उतनी उसकी उसका जो अच्छा है उतनी उतनी वीकनेस है, लाइक 50-50। तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक अगर हमें टॉप फोर लाइक को सीमेंट करना है हमारा पोजीशन, तो वी नीड कोनाटे और वर्जिल वैन डाइक टू प्ले। गुड Right. चांस कि हम, आई थिंक वी माइट जस्ट डू इट विथ थ्री Hmm. फोर गेम्स इन हैंड बिफोर Hmm. सीजन एंड, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि स्पर्स एंड न्यूकासल विल बी एबल टू कैच Hmm. अप। मे बी थोड़ा क्लोज रहेगा, बट आई थिंक विल हैव अ लिटिल क्वेश्चन। आई थिंक सो और एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि विथ कोनाटे ट्रेंट इज मोर कंफर्टेबल गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज कोनाटे काइंड ऑफ कवर्स अ बिगर स्पेस बिहाइंड हिम, लाइक या या। तो वो प्रेस आगे प्रेस करने के लिए देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड टू एक्सप्लॉइट दैट विंग्स। एंड हमेशा वी हैव सीन, आई थिंक दिस मैच इज आल्सो अनदर एविडेंस ऑफ कि जब हमारे फुल बैक्स आगे प्रेस कर रहे होते हैं इन द ऑपोजिशन हाफ और या प्लेइंग फ्रॉम द मिडफील्ड, देन वी आर मच स्ट्रांग। एंड कोनाटे हैज पेस, ही हैज द फिजिकलिटी टू फेंड एवरीबॉडी। या। एंड I think the most important part of the game was keeping Anthony and Rashford quiet। मतलब
Yeah. पॉकेटेड प्रॉपर, एक Yeah. चांस नहीं। मे बी एंटनी का फर्स्ट हाफ में वो एक अच्छा चांस था जहां पे एलिसन मेड अ रियली गुड सेव डाइविंग टू द राइट, बट उसके बाद आई डोंट थिंक गरबा मास्टर ने या फिर इसने कुछ खास किया नहीं। लाइक रैशफोर्ड Yeah. वाज आल्सो इनफेक्टिव इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। आई थिंक उसका पोजीशन भी वियर्ड, आई डोंट नो व्हाई रैशफोर्ड wasn't put completely on Trent side. आई थिंक जब हम यूनाइटेड के सामने खेले हैं, लाइक मैंने जितने भी गेम्स देखे आज तक, उसमें इफ वी प्रेस वेल तो हमारा ऑफेंस ही हमारी डिफेंस का लाइक इट टेक्स केयर ऑफ इट। क्योंकि ऑब्वियसली हम बॉल अपनी तरफ अपने पास रखेंगे ज्यादा, तो यूनाइटेड का ये जो है काउंटर अटैकिंग और ये सारी जो टैक्टिक्स, वी इट वाज इजी फॉर अस टू नलिफाई इफ वी प्लेड वेरी वेल। तो आज वो हुआ, एंड आई थिंक दिस वाज अ रियली गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर अहेड ऑफ रियल मैड्रिड टू, क्योंकि हमें उस मैच में भी लाइक वी नीड टू स्कोर अ लॉट। I don't know what will happen. I mean, Champions League का कुछ भी हो सकता है, but I think we can have a little belief that हाँ हम मार सकते हैं। Like even in the first leg we scored. So I think ये गेम ने हमें थोड़ा like it gave us a little not little, I think a bigger boost. मैसिव बूस्ट। Yeah. और एक और चीज इफ यू वुड नोटिस, आई थिंक एक और बंदा जो छुप गया, Hmm. लेजेंड, कहाँ से मीरो और कहाँ थे मीरो, पूरे Yeah. मिडफील्ड में कहीं नहीं दिखे वो, कोई इम्पैक्ट नहीं Yeah. उस बंदे का। एंड Yeah. इट इज सरप्राइजिंग कि कैसेमीरो एंड फ्रेड जैसा मिडफील्ड जो मचा रहा था, सडनली इन फ्रंट ऑफ हार्वी एलियट को तो वो गिरा के, मतलब दे कुड हैव बुलीड हिम। Yeah. It was just crazy how bad Manchester United was today. Like I don't know what happened. Yeah. It was maybe first half में bad नहीं बोल सकते, but second half was, oh my god, second half was So really really bad. ये प्रूफ है आई थिंक कि अगर आप कैसेमीरो भी ले आओ, लाइक राफेल वरान ले आओ, these are अच्छे प्लेयर है, ये अच्छे प्लेयर है। मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। रियल मैड्रिड में ऑब्वियसली उन्होंने काफी ट्रॉफीज जीती है, पर यू कैन नॉट हैव एवरेज प्लेयर्स बिसाइड देम एंड देन एक्सपेक्ट कि ये वही रियल मैड्रिड वाला मैजिक करे। तो यही यही चीज है। आई मीन कैसेमीरो के साथ फ्रेड रख के, आई डोंट थिंक देयर इज मोर बिगर इंसल्ट टू कैसेमीरो देन हैविंग हिम प्ले विद फ्रेड। तो ये सारी चीजें आई डोंट थिंक यूनाइटेड के लिए देयर आर एनी गुड hopes to have even in next season. They probably need a lot more. But अगर हमारे पे फोकस करें तो आई थिंक they give us a lot of chances to go ahead. हमारी प्रेसिंग गेम थी, आई थिंक उन्होंने हम पे इतना प्रेशर बनाया नहीं है। लाइक एट नो पॉइंट आई वाज वरीड कि गेम हमारे हाथ से जा रहा है, लाइक पोजेशन वी Right, आर right. काइंड ऑफ लूजिंग। लाइक एक तो इंस्टेंसेस एक हुए, दो लाइक instances थे, फर्नांडेस का right, हेडर लाइक क्लोज गया, right, बट right. थिंक एलिसन हैड इट कवर्ड। तो Hmm, एक तो ऐसे चलो होता है हर गेम, लाइक hmm. ऑपोजिशन गुड ऑपोजिशन है तो दे विल गेट द चांसेस, बट they I don't think they were in a position कि हमको ओवरवेल्म कर लेंगे कोई भी हिसाब से। तो this actually tells a lot about the United's level. Acha. Okay, so we'll move on to the next topic that I kind of felt is today's game cements this idea. Is this the post Mane Salah Firmino era? With now Mane gone, Firmino is also going. Uh, with Cody Gakpo and Nunes. Hmm. Do you think this is the preferred front three, even if Jota and Luis Diaz are fit? And क्या है मतलब, what do you think about this? And also, Ah, I would make a statement right out here. ये जो लोग जितने भी लोग बोल रहे थे ना कि हम लोग गैक्पो को क्यों लेके आए, आज आज टुडे वाज एन एग्जीबिशन ऑफ हम क्यों लेके आए उसको। यस, वी बॉट हिम, मिडफील्डर के जगह हम उसको लेके आए, but we would have definitely lost this player to Manchester United, and he's the same player hmm. who scored twice against them. So try to rationalize this signing in compared to, like, मतलब आइडिया ये है कि हमने एक फॉरवर्ड साइन किया जब हमें एक मिडफील्डर की जरूरत Hmm. थी, एंड आई वुड से कि हमारा एटीट्यूड हमेशा ये होना चाहिए कि एट राइट पॉइंट वी शुड गेट द प्लेयर्स दैट वी वांट, बाद में वी कैन ऑलवेज कम बैक टू द डेफिशिएंसीज विद इन द स्क्वाड, और ऑब्वियसली कोई मिडफील्डर मार्केट में है कि नहीं, एंड Hmm. व्हाट इज फॉर अस देयर। बट Yeah. आई थिंक जितना कोडी गैक्पो के साइनिंग को लेकर क्रिटिसिज्म था, आई थिंक
it's all done and dusted. Today, I think आज के बाद से किसी को Yeah. ये point उठाना ही नहीं चाहिए कि why did we sign him? Yeah. So I think there are two ways of looking at it. एक तो है कि this was predicated on the Klopp's part की हमारे players fit हो गए like Jota, Diaz और ये सब and we'll get more stability like even mid में और defense में हमारी and he felt कि हमारी squad is good enough कि top four दिला दे. I don't think he really expects maybe to win Champions League, but वो हमारे प्रीमियर लीग के जो गोल्स है वो आई थिंक ही थॉट कि विथ गैक्पो ही कैन अचीव तो ऑब्वियसली दैट सीम्स टू बी पेइंग ऑफ बट अगर इस गेम में if we had drawn if we had lost any of the games that we have won in like past 3-4 games तो मे बी कॉन्वर्जेशन थोड़ी अलग होती कि नहीं तुम्हें मिड लेना ही था then Right. maybe if Gakpo had not scored as much, I still say that Gakpo is not as much effective. अगर हम 0-0 पे चल रहे तो I don't see him that involved or like confident. और ये मैंने पढ़ा भी था कि like after he scores he becomes something else. Maybe young player है. I think obviously scoring a goal gives him that internal boost. तो ये भी है पर I think at the for Klopp, this seems to be paying off, signing Gakpo. I He's और scoring good goals. ऐसा नहीं है कि luckily मार दिया no, like the tap first in goal was merchant or thing. Yeah, first first goal goal उसने was जो so gap good. निकाला, that was so good. And I think that was crucial also because at that point of time we were there 30-40 minutes tak we did not have a shot on target also. So like Hmm. just before the half time getting that goal was important. Maybe अगर 0-0 होते तो second half हम लोग इतना high confident start Yeah, नहीं कर पाते. Maybe I think that would have yeah, that is definitely the defining goal. yeah. And I think और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि today's game was also an answer to people of why Klopp did not essentially sign a midfielder because he thought कि अगर Fabinho जिस mind space में था अगर वैसे ही continue करता which he did today what mental fortitude he showed today completely changed the game like Yeah, Henderson was comfortable because Fabinho could do Fabinho things yeah. and Harvey Elliott was doing really good वो भी matter करता है but I think Fabinho completely turned it around in like जितना भी उसने पूरे साल में बेकार खेला है आज का उसने पूरा पैसा वसूल किया है Yeah. and you can't fault a manager for that reason कि like अगर वो expect करता है कि सब लोग उसी level पे खेल रहे होते like Fabinho if he started the season the same way he did I don't think we would be in this kind of situation maybe not cruising but not doing this bad I Yeah. so Klopp ka faith in his midfield when the season started was genuine and justified. Maybe not so Hmm. much in Alex Oxlade-Chamberlain or Naby Keita जैसे players नहीं, but then Henderson and Fabinho turned out today their performance was as good as our title-winning seasons and seasons previous. What Hmm. do you say? I think तुम्हारा assessment is almost on point, I would say. But I'm not disagreeing with most of the things you're saying, but I think लोगों को ये हक है to expect better from the team. I think given like क्लॉप ने जिस तरह से आज तक डिलीवर किया है क्लब के लिए, so they want him to win obviously. But I think क्लॉप की जो थोड़ी stubbornness है, that has cost us. I think I Definitely. would say at least one or two trophies. Right. I'm not saying it is absolutely regrettable. Like हमने जीती हुई है trophies. Like we reaching See, a it is final all. also is a big. So See, yeah. There are like capital. छोटी छोटी चीजें हैं कुछ हो सकती है. I understand. I understand. I'm not saying कि You. Klopp is fully responsible, but I think people उनको यही point पकड़ते हैं लोग. And that is fine. I'm not saying कि they are wrong. But I think उसको पकड़ के भी हम like we cannot keep harping on about it like पूरे तुम सीजन शुरुआत हुई तब वो रोना रुदाली की तरह चालू कर दिया मिडफील्ड एफएसजी आउट क्लॉप आउट वो करके तुम पूरी सीजन वही चलाते रहो. I think See, at comes a point you just have to get on with it. I think it is not about FSG. चलो ठीक है. We will not get into that part of it, but I think Klopp has faith in his players and his capabilities, Yeah. and I think he was wrong. But मतलब form जैसा था लोगों का, he was wrong. But
Was he wrong in having that faith? I don't think so. And today's No. match and today's Fabinho's performance shows that agar wo us mental space mein, and everybody has that phase. Fabinho was fabulous for 4 years, and then Hmm. suddenly this season he just did not turn up, and it just happens. तो मतलब Yeah. हम लोग जनरली जंप करते हैं ना कि लाइक क्यों नहीं साइन किया, बट हाउ वुड अ मैनेजर नो अबाउट दैट? आई जस्ट वांटेड टू Yeah. से कि आज का गेम वाज बेसिकली एन आंसर टू दैट, or a reason why he did not sign a midfielder in first place, because he had faith in his midfield. And Yeah. when he has the faith he has in them, अगर जब वो करते रहते ये सब consistently, you can see what results it shows, Hmm. especially with a good team like Man United जिन्होंने इतना अच्छा किया है throughout the year. Showing them what they can do was, I think, critical answer to that question. And Yeah, and I think Klopp is kind a little changing. जैसा हमारा क्लब का जो transfer, जो I think we have discussed this quite a lot before, but hmm, that is probably a change that is going through the club. hmm, So maybe they feel that this has to be a transition season of some hmm, sort, like internally, इनकी like जो भी चला रहे, like they may not be doing that Moneyball thing anymore. right, क्योंकि like वो Moneyball film में like there is dialogue. I saw it like a week ago, इसलिए याद है मेरे को, like fresh hmm, है. hmm, कि like your goal has your target has to be buying wins, like not players. So I think we right, probably are not doing that because I think जो था like Julian Ward or Edwards, they are not there. hmm. Or if we are not I replacing think them with that type of person, I yeah, think fundamentally change hoga sab kuch. yeah, Also, I think with players like Bicetic and Harvey Elliott, if they do these things consistently, yeah, maybe we need not buy 3, 4 midfielders. We need to buy maybe one or two, probably two midfielders, so that we have a good squad of 4, 5. Like obviously, kind yeah. of दो midfielder इसलिए क्योंकि तुम्हें हेंडरसन एंड मिलर को रिप्लेस करना One है. has to be fit always. Yes, one has to be fit always. Chalo, we'll move on to the next two things and we'll quickly finish. Hmm. Uh, this question, I mean, clearly, Anfield factor is there. That's an Yeah. evidence 100%. Do you think ये Anfield factor हमें top 4 तक ले जाएगा? And how much will it also depend on कि हमारे away performances कैसे होंगे? Considering this performance, like, do you think it was just Anfield factor performance, or do you think it is like a Liverpool performance and ये हम आगे even in away games देखेंगे? I don't think Klopp ने like away factor को nullify कर दिया है जब से वो आया है. I don't think it has actually mattered to us that much. At Anfield it does because Anfield पे हम कई बार ऐसे situations में रहे हैं कि like we are under pressure during the game. So on that time we have delivered. But away का जो fear I think जो पहले था, I've never had that. Like after seeing Klopp play a few games, like the way we have routed opposition away, like Right. quite a few times. Hmm. तो वो है नहीं. But yeah, at Anfield, I think it really helps. क्योंकि वो crowd motivation है वो जो भी है, like it kind of pushes them a little. Right, right. Like No, I मतलब I rationalizing this result कि I don't want to say कि अरे यार Liverpool is back, no, right? no, yeah, it's So we have to be realistic about it. And so मेरा question basically यही था कि do we think it is just because it was the occasion, Man United है, Anfield है, everything is like we there's so played well. much history, there is so much to play for, there is so much behind this fixture, like season अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, you want to do well. We Yeah. did. But is this an evidence of one-off performances, or is this, you think ये continue होगा आगे जाके? ये continue होगा and I think we always have played better against big good teams. तो हमारे teams है like we still Right, have to play like good teams. right, So I think we will naturally do extra bit. right, और जो like Brentford types है ये सारी टीमें हैं. right. उनके सामने I think there is still a little mental block because Hmm, हमारी ability है नहीं mid से to hmm, break them down right now. So I right. think that gets into their minds probably. तो Hmm, पहले से ही वो defensive हो जाते हैं. Then those teams go tackle, flying tackles, गिरा देते हैं, चाटा मार देंगे, right, पीछे से कुछ भी करेंगे, they'll tickle you or whatever. So I right. think that kind of breaks players' concentration, and this is it's fine. It's fine. I mean, like they are professionals. I'm not. But yeah, you kind of feel कि जो अच्छी team है, they focus more on playing than harassing the opposition. So हमें Hmm, I think we might see not quite favorable result against like lower opposition.
जो Right. बॉटम 5 में है या बॉटम 10 में. Right. But I think bigger teams के सामने will at least snatch a point Right. or win. Okay. Chalo. One last thing that I wanted to discuss. Obviously, Real Madrid. Real Madrid hasn't been doing that great, but that has been the trend. They don't tend to do well when they're going through a bad phase. उनका हमेशा ला लीगा का performance question में होता है, but in Champions League they turn up differently. But does today's performance give any evidence to what should we expect in Champions League? I am not very hopeful. For me, even if we go to Santiago Bernabeu, win, like let's say we win 3-2, that win I will take, because that is something that Liverpool can build on as a new team. But are we going to outright go and demolish them? मुझे नहीं लगता है. But what do you think with the United game? Do you see a miracle happening? Can we do I, it? Can a Barcelona happen once again? I don't think it But will this be a time in miracle. Spain. Yeah, I don't think it will be a miracle if we demolish them. हम last leg में we played really well in that opening phase. Right. फिर like yeah we made mistakes of course because Real Madrid के साथ history है, like we have lost two finals. But if we go and demolish them, which I'm not saying it's a remote possibility at all, like Dortmund के सामने we never thought we'd win. Barcelona के सामने we never thought we'd win. There was Lionel Messi in front of us. I mean, Lionel Messi एक नाम से ही like लोग डर जाते हैं. Teams should fear him, but we still won, and we did not concede one at all to that attack. So Hmm. I'm not thinking it's realistic that we will not concede against Real Madrid, but we are very much capable of scoring 4, 5, 6. We can do that. It's just a matter of हम अंदर से ready है. Like will Real Madrid really play that a little off that day? I think that has to happen for Hmm. us to you really go into that demolition Right. charge or deploy करने के लिए. Right. देखते हैं क्या होता है. But I will not dismiss that game out of hand कि नहीं नहीं चलो ना चलेगा. देख लेंगे like for spirit और सिर्फ स्पेन मैड्रिड घूमने के लिए जा नहीं, रही है टीम अगर ऐसा. I will not take it that way. हम लोग ने अपार्ट फ्रॉम द चैंपियंस लीग में जब अपन ने बार्सिलोना में 2-1 हराया था, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैवंट बीन एबल टू डिफीट स्पेनिश टीम्स इन स्पेन. इससे पहले भी आई थिंक नो इंग्लिश टीम हैज एवर डिफीटेड अ स्पेनिश टीम इन स्पेन बिफोर लिवरपूल हम डिड. हमने एटलेटिको को हराया था या वी ड्रू इट. आई थिंक ड्रॉ किया था, हमने हराया नहीं था. ओके. So I think winning against Real Madrid at Bernabeu in their home on their home turf, उनके crowd के सामने would be like a crazy boost of confidence for us. And I think वो होगा तो अच्छा लगेगा. Let's hope for the best. And thank you Dhaval for joining. बहुत मजा आया आज तो. Yeah. जाने से पहले आई थिंक मैं एक ट्रेंड बनाना चाहता हूँ. अब मैं आया ही हूँ तो गाना नहीं गाऊंगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये कॉपीराइट क्लेम हो जाता है. दो गाने हैं मेरे पास. एक है आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सनी 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 सनी. वाह. Yeah. और दूसरा एक है, आई थिंक ये जेन्युइनली ऐसा लिवरपूल के देखे हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना है कि क्यों दुनिया में आया हूँ. बस Yeah. ऐसे ही दिन हमें लिवरपूल देते रहे, ऐसे ही दिन सनी और बीच पे पानी, और अपने दिन में खुशियां ही खुशियां हो. एंड just we live Liverpool, we breathe Liverpool, we'll die Liverpool, and hopefully that will be the sentiment amongst fans. And just बहुत मजा आ रहा है आज के दिन, और फॉर सम अदर रीजंस ऑल्सो आज मैं बहुत खुश हूँ. एंड लिवरपूल ने खुशी और भी बढ़ा दी है. सो होपफुली गाइस, भले ही तुम्हारा मंडे है, संडे बहुत ही अच्छा गया. मचा दो ये वीक में, और मचाने के साथ साथ हमें भी थोड़ा सा प्यार दिखा दो. जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर कंटेंट. Yeah. मेरे नेम टैग के नीचे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है. हमारा आवर टीम इज डूइंग अमेजिंग रील्स. बहुत मजे आ रहे हैं ये कंटेंट प्रोड्यूस करके एंड टू शेयर इट विद यू गाइस. सो subscribe to us on YouTube, and then follow us on Instagram, and then maybe next time हम फिर से आएंगे Yeah. इसी इसी
इसी खुशी के साथ, एंड until then we'll say goodbye. Yeah. And just one thing, for my United friends, I don't think एक ही है शायद, तेरा he knows who he तेरा is. भाई है. उसके लिए अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया. Bye bye. Bye guys, bye.